Good morning, friends. So, welcome to the Prelims Booster session. So, the first topic is counting deaths in India's prisons. तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कमेटी जो है प्रिजन रिफॉर्म्स की, उन्होंने कहा है कि सुसाइड जो है वो लीडिंग कॉज है अननेचुरल डेथ्स का प्रिजन्स में, अमंग प्रिजनर्स ऑफ कोर्स. तो प्रिजन डेथ जो है उनको नेचुरल या अननेचुरल जो है वो लेबल किया जाता है. प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट जो कि एनसीआरबी पब्लिश करता है हर साल. 2021 में अगर हम देखें तो 2000 से ज़्यादा प्रिजनर्स जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में उनकी डेथ हुई. उसमें से 90% केसेस जो थे वो नेचुरल डेथ के थे. नेचुरल डेथ क्या होती है? एजिंग या इलनेस, ठीक है. अननेचुरल डेथ क्या होती है? जैसे सुसाइड हो जाता है, इनमेट्स जो है वो मार देते हैं, आउटसाइड एलिमेंट से असॉल्ट हो जाता है. सुसाइड रेट जो है वो अगर हम देखें प्रिजनर्स में वो ट्वाइस है इन नंबर एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन. अब डेथ्स को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है? अगर 1993 से हम देखें तो एनसीआरबी जो है वो कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है उसको 24 घंटे में एनसीआरबी को बताया जाना पड़ता है. अगर कस्टोडियल रेप या डेथ हो जाता है तो सीआरपीसी कहता है कि कंपलसरी जुडिशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी. अब सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें कुछ जजमेंट्स हैं. आर डी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कहा गया है कि सोशल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स प्रिजनर्स हेल्थ, क्योंकि वो डबल हैंडीकैप से सफ़र कर रहे हैं. पहला तो उनको जो है वो एक्सेस टू मेडिकल एक्सपर्टीज़ नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू फ्री सिटीजन्स. दूसरा, कंडीशन ऑफ इनकार्सरेशन मतलब उनकी इम्प्रिजनमेंट की वजह से भी जो है उनको ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री सिटीजन्स. अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा? मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 की जो है वो कहती है कि मेंटल हेल्थ केयर पर ध्यान देना है. सुसाइड रेट्स जो हैं वो मेडिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज दोनों की वजह से हो सकते हैं. सुसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस भी जो है इशू की गई है, जैसे कि सितंबर 2018 की जो कमेटी बनाई गई प्रिजन रिफॉर्म्स की, फॉर्मर जज अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए कि मैंडेटरी सेग्रीगेशन करो अंडर ट्रायल्स की, कन्विक्ट्स की और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की, और एक रॉबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाकर दो प्रिजनर्स को. स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, और जो जैसे सीनियर सिटीजन या सिक प्रिजनर्स हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जो है वो कोर्ट्स में पेश किया जाए. सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कहा गया कि सुसाइड प्रूफ बराक्स जो है वो कोलैप्सिबल मटेरियल के वो लगाए जाएं, ताकि जो है वो फांसी का फंदे के थ्रू जो है वो सुसाइड ना की जा सके. नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिहार कास्ट सर्वे. ये तो वैसे पॉलिटिकल टॉपिक है बट सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. बिहार गवर्नमेंट ने अभी डेटा रिलीज़ किया है कास्ट सर्वे का गांधी जयंती के दिन. तो इसमें फॉरवर्ड कास्ट जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी है उनकी 15.5% पॉपुलेशन है बिहार में. एस और एस की 20% पॉपुलेशन है और 1.6% पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिवली. मुस्लिम्स की 17.7% पॉपुलेशन है. अब ये जो सर्वे है ये 3 फेज़ में किया गया, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और फाइनल फेज़ में. और अगर हम देखें सर्वे के डेटा के हिसाब से तो शेयर ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन 27%, जो कि जितने रिजर्वेशन मिली है उससे कई ज़्यादा है. इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980s में आई थी वो भी ये कह रही थी कि 52% से ज़्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन है. तो इस बिहार के जो कास्ट सर्वे के बेसिस पर अगर हम देखें तो ओबीसी कोटा की डिमांड जो है वो शुरू हो जाएगी. ओबीसी की कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है स्टेट में वो 63% है, जो कि 10% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1931 का सेंसस जो कि किया गया था ब्रिटिश द्वारा डिवाइड करने के लिए. कास्ट जानबूझकर जो है वो उस टाइम पर इंट्रोड्यूस की गई थी सेंसस में. वही सेम जो है वो अब आपको पता ही लग रहा है कि बिहार के स्टेट में भी यही किया जा रहा है, ठीक है. तो ये इलेक्शन के लिए मोस्टली जो है ये कास्ट सेंसस किया जा रहा है ताकि अपोजिशन जो है वो डिमांड कर सके वो इसको कंट्री वाइड भी करवाने के लिए. अब चैलेंजेस क्या हैं बिहार कास्ट सर्वे के? अभी तक फाइनल आउटकम नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में. हाई कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ये सेंसस कर भी सकती थी कि नहीं, क्योंकि ये सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है. और सेंसस एक्ट 1948 सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एम्पावर करता है सेंसस करने को. ऊपर से इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट जो है वो 50% सीलिंग लगाती है रिजर्वेशन के ऊपर. तो अगर 80% के आसपास जो है वो रिजर्व कैटेगरी बन जाएगी तो ऑफ कोर्स ये जजमेंट वॉलेट होगी. नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मलेरिया वैक्सीन.
ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है, उसको रिकमेंड किया गया है यूज़ के लिए WHO द्वारा। ये वैक्सीन जो है सेफ्टी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस स्टैंडर्ड्स को जो है वो पूरा कर रही है। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से के थ्रू होता है। फीमेल मस्कीटो के इन्फेक्ट काटने की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है। कंटेजियस तो नहीं होता है ये, फीमेल मस्कीटो के काटने से ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स 10 से 15 दिन आफ्टर द बाइट ये इमर्ज होते हैं। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि इसको वेक्टर कंट्रोल किया जाए मलेरिया की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। कुछ एंटी मलेरियल मेडिसिन भी दी जा सकती हैं टू प्रिवेंट दिस डिसीज़। अगर हम इंडिया में देखें तो 1.7% ग्लोबल मलेरिया केस बर्डन इंडिया से ही आता है। 1.2% ग्लोबल मलेरिया डेथ्स भी इंडिया में ही होती हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया केसेस आते हैं। तो हमने नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान भी निकाला हुआ है मलेरिया एलिमिनेशन का, जिसमें हम कंट्री को मलेरिया फ्री करना चाहते हैं 2027 तक और एलिमिनेट करना चाहते हैं मलेरिया को 2030 तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स दिए हैं 2021-2022 पीरियड के। ये अवार्ड्स को 1993-1994 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो अवार्ड देती है हर साल। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो एनएसएस स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है अवार्ड। प्रोग्राम ऑफिसर्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को भी अवार्ड दिया जाता है ताकि वो एनकरेज कर सके एनएसएस यूथ को। अब ये नेशनल सर्विस स्कीम है क्या? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि स्टूडेंट यूथ है 11th और 12th क्लास का स्कूल्स का, उनको जो है इसमें अकोमोडेट किया जाता है गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स देने के लिए। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 जो रिपोर्ट UNCTAD ने निकाली है उसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसमें 20% हायर रहे हैं पिछले 10 साल में एज़ कम्पेयर टू उससे पिछले 10 साल। तो अगर हम देखें इस रिव्यू के हाइलाइट्स, तो शिपिंग इंडस्ट्री लगभग 80% वर्ल्ड की ट्रेड वॉल्यूम को जो है वो कंट्रीब्यूट करती है और 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कंट्रीब्यूट करती है। अब UNCTAD क्या है? एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है UN का जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट से डील कर रहा है। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। UN जनरल असेंबली ने 1964 में इसको बनाया है। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी को फेयरली और इफेक्टिवली जो है वो फैलाया जा सके उसके लिए इसको ये काम करता है। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है। कई तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑकस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑकस इनिशिएटिव के मुताबिक यूके ने 3 यूके बिजनेसेस को 4 बिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो एक अटैक सबमरीन जो कि न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा पावर्ड होगी वो बनाकर दें। ऑकस पैक्ट 2021 में साइन किया गया था। एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डील है अमंग ऑस्ट्रेलिया, यूके और US। अब ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो है उनकी उसका पिलर 1 ये है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाएंगे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को। पिलर 2 कहता है कि एडवांस कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करके। अब ये सबमरीन कंपोनेंट जो है इसका इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के थ्रू इक्विप किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 8 ऑफ न्यू न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जाएंगी ब्रिटिश डिज़ाइन की लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड। ऐसा पहली बार होगा कि US अपनी न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी UK के अलावा किसी और कंट्री के साथ शेयर कर रहा है। इससे ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की अंडर सी कैपेबिलिटीज़ जो है इंडो पैसिफिक में वो एनहेंस होंगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is counting deaths in India's prisons. This topic is important for your governance and social issues. Recently, Supreme Court Committee on Prison Reforms has found that suicide is the leading cause of unnatural deaths among Indian prisoners. So prison deaths are labeled as natural or unnatural by NCRB data every year. So in 2021, about 2116 prisoners died in judicial custody and almost 90% of the cases were recorded as natural deaths.
So natural deaths are basically deaths which happen due to aging and illness. Unnatural deaths are like suicide or murder. Okay, suicide rates among inmates have been found to be more than twice in comparison to what has been recorded in the general population. So, how are these deaths investigated? Since 1993, NCRB is required to intimate a custodial death within 24 hours, followed by post-mortem reports and other formalities. So, in case of custodial rape and death, CRPC requires compulsory judicial magisterial inquiry in place of an executive magisterial inquiry. There are Supreme Court judgments regarding the same also, like R.D. Rupadhyay versus State of Andhra Pradesh, which articulated that the social obligation towards prisoners' health because they are facing a double handicap. First handicap is that they do not enjoy access to medical expertise. Second is that their condition of imprisonment exposes them to more health hazards than free citizens. So, what steps have been taken? Model Prison Manual of 2016 and Mental Health Care Act of 2017 says that adequate investment in healthcare facilities should be done. Mental health units must be set up. Officers must be trained to provide basic and emergency care. Suicides also arise out of both medical and mental health issues. So that has been recognized. To prevent suicide, specific guidelines have been issued. Recently, Justice Amitav Roy Committee, which was formed by Supreme Court in September 2018, recommended that there should be mandatory segregation of under trials, convicts, and first-time offenders inside jails. There should be a robust grievance redressal mechanism. There should be special fast-track courts, and senior citizens and sick prisoners must be produced in courts only through video conferencing medium. To prevent suicide, suicide proof barracks with collapsible material should be made. Okay. So the next topic is Bihar caste survey. This topic is important for your social issues. So Bihar government has recently revealed the results of its caste survey, and as per the survey, forward castes or general category accounts only 15.5% of the population. 20% are scheduled caste and 1.6% are scheduled tribes. Muslims comprise 17.7% of the population. The survey's first phase was happening in January 2023. Second and final phase kick-started in April, but there were some judicial issues. After only getting a go-ahead from Patna High Court, the survey was completed. So as per the data, the share of OBC population is much higher than the reservation made for them, that is 27%. So as per Mandal Commission report itself in 1980, the share of OBC population in the country as a whole was at about 52%. As per this new data, the combined OBC strength in Bihar is 63%, which is 10% higher than the one which was estimated in 1931 census. So opposition is going to, of course, demand a nationwide caste census to politicize this issue, of course. So, what are the challenges ahead for the Bihar caste survey? Of course, this issue is waiting final outcome before the Supreme Court. So, because under the garb of a survey, the state has performed a census which is not under the legislative competence of a state government, because as per the constitution, the census falls under the union list under schedule 7, and as per census act of 1948, the central government is only empowered to conduct a census. Also, in case if it goes ahead, then it would also violate the Indra Sahni versus Union of India judgment, which has fixed 50% ceiling for reservation. So the next topic is malaria vaccine. This topic is important for your social issues. R21 matrix M malaria vaccine, which has been developed by University of Oxford and Serum Institute of India, has been recommended for use by WHO. So this vaccine has met the required safety, quality, and effectiveness standards. You know that malaria is a parasite laden disease, and it transmits through female Anopheles mosquito. It's a life-threatening disease, but it is preventable and curable. Malaria is not contagious, but it
gets transmitted through the bites of a female mosquito. Its symptoms start beginning within 10 to 15 days after the bite of an infected mosquito. Fever, headache, and chills are typically experienced. So the vector control is the main approach to prevent malaria and reduce transmission. Some anti-malarial medicines can also be used to prevent this disease. So malaria, of course, in India, about 1.7% of the global malaria case burden is there in India. 1.2% of global malaria deaths happen in India. States like Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, and Madhya Pradesh disproportionately account for nearly 45% of malaria cases. We already have launched this national strategic plan for malaria elimination, and it aims to make this country a malaria free by 2027 and eliminate malaria altogether by 2030. So the next topic is National Service Scheme Awards. This topic is important for your governance and social issues. Recently, President of India has presented the National Service Scheme Award for the year 2021 and 2022. These awards were instituted in the years 1993 and 1994 by Ministry of Youth Affairs and Sports, and it aims to recognize outstanding contribution by NSS students, volunteers, NSS program officers, and program coordinators in community service. So NSS is basically a central sector scheme which provides an opportunity to the youth of 11th and 12th class of schools and uh, university level students to take part in various government led community service activities and programs. So the motto of the scheme is not me but you, and the nodal ministry is Ministry of Youth Affairs and Sports. So the next topic is United Nations Conference on Trade and Development. This topic is important for your international relations. According to the review of Maritime Transport 2023 by United Nations Conference on Trade and Development, greenhouse gas emissions from international shipping were 20% higher than in the last 10 years. So overall, shipping industry contributes to over 80% of world's trade volume and nearly 3% of global greenhouse gas emissions. If we look at United Nations Conference on Trade and Development, it is the leading institution which deals with trade and development. It is a permanent intergovernmental body which aims to support developing countries so that access of benefits of a globalized economy can be distributed more fairly and effectively. Its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland, and its certain reports are published by UNCTAD, that is uh, uh, Trade and Development Report, World Investment Report, Least Developed Countries Report. So the next topic is AUKUS. This topic is important for your international relations. So as part of AUKUS initiative with Australia and the US, UK has given three UK businesses a £4 billion contract to design and build an attack submarine powered by nuclear energy. So this AUKUS pact was established in 2021, and AUKUS intends to be a strategic partnership among Australia, UK, and US. This trilateral partnership revolves around two pillars. The first pillar revolves around acquisition and development of conventionally armed nuclear powered submarines for the Australian Navy. Second pillar calls for collaboration on advanced capabilities, which would involve technology and information sharing. So this submarine component basically aims to equip Australia with nuclear powered attack submarines, and after this after completion, Australia will end up with eight of the new nuclear submarines called SSN AUKUS, and these submarines will be based on a British design, but they will have American technology. So this deal is the first time that US is sharing its nuclear propulsion technology with an ally other than the UK, and this will of course significantly enhance Australia's undersea capabilities in the Indo-Pacific region. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.